हेलो स्टूडेंट्स, आई होप समस्ते भलो थे। बहुत दिन पर आज मु क्लासटा करुच्ची जेहेतु किसी माँ स्वास्थ्य बहुत खराब थिला जे टिके भलो अछंती सेटा पई मु आज क्लास कंडक्ट करछि। आगो भी मु कहितली क्लास हेई पार नथला, सेटा पई मु समस्त को क्षमा प्रार्थी। आज क्लास हबो ना, तो समस्त को टिके अनुरोध कि प्लीज टी कोऑपरेट करो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो समस्त को, है ना। आ मत समय दियो मुझे शेयर कर दे। आज 8टा क्लास कर दी, 8:30 सब होता है कि आज 8 क्लास कली, है ना। मत कि समय दो मुझे शेयर कर दियो। ओके, मुझे शेयर कर दूसरी, मत कि समय दो एमसीक्यू क्लास आरंभ करवा आज, है। कलो प्रणाम प्रणाम, हैप्पी थैंक यू कार्लोस, है ना। प्लीज समस्त शेयर कर दियो। थैंक यू वेरी 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 थैंक यू। आज क्लास 8 आरंभ करदेली, है ना। मत समय मुझे शेयर कर दूचे, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मुझे शेयर कर दूचे, है। आ सब भल अच्छ जो समस्त स्टूडेंट्स केमी सब पढ़ापढ़ी चलती? टिके खाली मुझे शेयर कर दूचे, टिके खाली समय। चलो आरंभ करवा क्लास टी। अरे गायब नहीं, माँ स्वास्थ्य खराब थिला। प्रणाम प्रणाम। माँ स्वास्थ्य खराब थिला बहुत, तो सेटा पाई मु थैंक यू प्रीति। टीचर्स डे रे तुमको भी ये, है ना। मोर साउंड समस्त क्लियर अच्छी? आई एम ऑडिबल ऑल ऑफ यू? मो साउंड समस्त क्लियर अच्छी? प्रीति एंड कार्लोस साउंड क्लियर अच्छी? आई एम ऑडिबल? ओके, चलो आरंभ करवा क्लास टी, है ना। देखो कौन राइट आंसर है देव चेष्टा करो। व्हिच रिवर, which rivers form the largest delta in Odisha coastal plain? ओके, जो देखिए को रिवर टा सबुठु अधिक लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करे ओडिशा कोस्टल प्लेन रे। ओके, कौन सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुलिया। ओके, कोडा सबुठु बड़ डेल्टा फॉर्मेशन कर, लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्मेशन कर, व्हिच इज रिवर, व्हिच ऑफ द रिवर इज फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन ओडिशा कोस्टल प्लेन? ओके,
कौन रहिबो राइट आंसर यार? दैट इज महानदी। ऑप्शन सी रहिबो महानदी है ना, महानदी रहिबो राइट आंसर। तापर देखो which coastal plain stretches from which river in the northern to which river in the southern ହେଲା जो देखिबा ओडिशा जदि हाइपोथेटिकली वे रे देखिबा तो एटा मु ओडिशा रो मैप टा बनौछि ହେଲା एटा मन रखे तो ओडिशा रो मैप टा बोली ହେଲା है ना चिलिका लेक टाइड अछि है ना देखो तो कोस्टल प्लेन स्ट्रेचेस फ्रॉम रिवर इन द नॉर्थ होला नॉर्थ टू ना साउथ भितरे को रिवर आछि को रिवर सब आछि से जति प्रीति वंशधारा वंशधारा हाँ महानदी टू वंशधारा सुवर्णरेखा ऋषिकुल्या वैतरणी टू नागावली कोल्ला को जिनसटा रहइबो होला ओडिसा रो कोडा कोडा रहिबो राइट आंसर आरे कोन रहि परिबो जदियो प्रीति बहुत बढ़िया राइट आंसर देछंदी ए राइट आंसर बहुत बढ़िया आंसर दो चेष्टा करछंदी राइट आंसर रहइबो सुवर्णरेखा टू ऋषिकुल्या ओके प्रीति सुवर्णरेखा टू ऋषिकुल्या थैंक यू प्रीति एंड मंजरी आउ की थिले कोन सबु सार कोन ये करथिले सार माँ देह भल है ना ये जिन पचार धन्यवाद माँ स्वास्थ्य भल अच्छी है ना से मो क्लासटा छुट्टी थी गोटे 10-15 दिन मतलब क्लास कर पार नी से मु समस्त को कौच धन्यवाद से सपोर्ट कर थैंक यू प्रीति एंड अन्य जो मैंने भी थी समस्त धन्यवाद है ना which plateau in Odisha comprises the upper Baitaraní catchment basin है ना which plateau in Odisha comprises the upper Baitaraní catchment basin कौन नवरंगपुर जयपुर प्लेट्यू है ना पुंसा केउंझर पालाहारा प्लेट्यू सिमिलपाल प्लेट्यू है ना चंद्रगिरी प्लेट्यू कौन रहिबो प्रीति कालो सालकरा बोधे पड़ी गले बहुत बढ़िया है ना ऑप्शन बी रहिबार राइट आंसर है ना ऑप्शन बी टा हबार राइट आंसर यार देखो देखि दियो एटा जति हबो मो पीडीएफ टी समस्त को पीडीएफ टी हमरो पाइ जो को जगह को पीडीएफ टी हमें पाइबा हमर टेलीग्राम ग्रुप हले टेलीग्राम ग्रुप रे हला टेलीग्राम ग्रुप रे यार पीडीएफ पाइबा टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होवा पई हमरो वीडियो डिस्क्रिप्शन रे समस्त जाई पारे हला व्हाट इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन ओडिशा ओडिसा रो द्वितीय सर्वबृहत हाईएस्ट माउंटेन पीक कोडा को देवमाली है ना गालीकोंडा महेंद्रगिरी है ना शंकरम कौन सिनकाराम कौन रहा राइट आंसर ये जगह प्रीति कार्लोस न जो मैंने ऑनलाइन अच्छो देवमाली इज द फास्ट हम देवमाली प्रथम हम सेकंड लिखाई ना कंफ्यूजन लीडर हम ना देखो एग्जाम रे स्पीड रे करो मन ना किंतु प्रेजेंस ऑफ माइंड हरई बसबो ना है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड हरई बसे अपकमिंग एग्जाम गुडा समस्त प्रिपेयर था है ना भल से प्रिपेयर थी मुझे कौन सेकेंड हाईएस्ट पिक है फास्ट नहीं फास्ट हूँ आम कौड़ा गल फास्ट हूँ आम देवमाली है द्वितीय हूँ महेंद्रगिरी ओके सेकेंड हाईएस्ट पिक इन ओडिशा दैट इज महेंद्रगिरी महेंद्रगिरी द्वितीय सब बृहत्तम को डिस्ट्रिक्ट अच्छी गजपति जिलार अच्छी को जगार अच्छी गजपति जिले अच्छे ना व्हिच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द गोनासिका हिल इन केउंझर डिस्ट्रिक्ट जो देखा को रिवरटा व्हिच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द गोनासिका हिल्स इन केउंझर डिस्ट्रिक्ट महानदी बैतरणी ब्राह्मणी ऋषिकुल्या गजपति अच्छी बहुत बढ़िया है ना व्हिच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द गोनासिका हिल्स कोडा ओरिजिनेट होची महानदी बैतरणी ब्राह्मणी ऋषिकुल्या देखो राइट आंसर हम बैतरणी रिवर गोनासिका हिल रु ओरिजिनेट होचला को रिवर रही ओरिजिनेट गोनासिका हिल रु बैतरणी रिवर ओरिजिनेट होचला केउंझर डिस्ट्रिक्ट अछि which river form a combined mouth with Baitaraní before entering the Bay of Bengal okay देखिबा the river forms a combined mouth with the Baitaraní before entering the Bay of Bengal the Baitaraní मिसिबा गरु बैतरणी को नदी सहित मिसिकी सेटा ये हुए सेटा को पता चला महानदी ब्राह्मणी को सुवर्णरेखा ऋषिकुल्या कौन रहिबो राइट आंसर ए जगह रे प्रीति अच्छा मो इंटरनेट स्लो चलछि कि जदि फ्लक्चुएशन जना पड़छि काकू लैकिंग वगैरह होछि कि साउंड क्लियर अछि ये कंफर्म करबो प्रीति राइट आंसर हो ब्राह्मणी हो ना ऑल क्लियर थैंक यू है ना व्हिच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द ऋष्यमाला हिल्स इन कंधमाल डिस्ट्रिक्ट देखिबा
ए को रिवर ओरिजिनेट है ऋष्यमाला हिल्स इन कंधमाल डिस्ट्रिक्ट है कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रो ऋष्यमाला हिल रु को नदीटा ओरिजिनेट है वंशधारा नागावली ऋषिकुल्या कोलाब ऋषिकुल्या बहुत बढ़िया प्रीति ऋषिकुल्या इज राइट आंसर है ना ऋषिकुल्या बहुत बढ़िया राइट आंसर and which rivers tributary include the Iebu Veden and Ong है ना देखिवा को रिवर ट्रिब्यूटरी इंक्लूडिंग ई वेदेंग एंड ओंग है ना को रिवर ट्रिब्यूटरी सब है ना देखिए कौन ब्राह्मणी महानदी बैतरणी सुवर्णरेखा महानदी हम है ना महानदी हम राइट आंसर ओके when was Odisha officially formed as a separate state okay जो देखिए ओडिशा प्रथम थर पे ऑफिशियली केबे सेपरेट स्टेट रो मान्यता पाइसला है ना 1 अप्रैल 15 अगस्त 26 जनवरी 1 नवंबर 1 अप्रैल 1936 मसीहा ओडिशा स्टेटहुड डे मध्य से जगह बना 1 अप्रैल रे बना जाए ओके तब देखो which beach in Odisha is famous for the olive red turtle nesting ओके जो देखिए ओडिशा रो को जगह रे फेमस अछि ऑलिव रेड ले टर्टल पय हला या भीतर कोडा पुरी चंदीपुर बीच गोहिरमाथा एंड गोपालपुर बीच गोलपथ है गोटे गोटे जगह गोपालपुर बीच भी कही है गोपालपुर ऋषिकुल गोपालपुर बीच तो नहीं ऋषिकुल्यार किसी जगार देखा मिल कि आमर कौन सरी गोलपथ राइट आंसर एटार किंतु से जगार ऑप्शन जब या बेतले एटा थी से भी मारी पार किसी असुविधा ना कहीं से जगह गोटे गोटे जगह से भी देला गोलमाथा इज राइट आंसर तापर देखो अरे अरे आंसर दे दिले हो छाड़ किसी असुविधा नहीं वी स्टेट बार्ड ऑफ ओडिशा ओडिशा स्टेट बार्ड कोडा कहबा हमें ओडिशा स्टेट बार्ड रूपे आम कोडा को जाना भल से कहल ओडिशा स्टेट बार्ड मैंने कौन इंडिया रोलर पिकॉक किंगफिशर हॉर्नबिल इंडियन रोलर बहुत बढ़िया प्रीति इंडियन रोलर है ना विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट्स ओके तो देखिए विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट है ना फंडामेंटल राइट से तो को पार्ट्स इंक्लूड है पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़िया है ना पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तब देखो तो फंडामेंटल राइट वाज रिप्लेस्ड बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना कोड रिप्लेस करथिला तो फंडामेंटल राइट वाज रिप्लेस द 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा को फंडामेंटल राइट रिप्लेस करते इक्वालिटी प्रॉपर्टी फ्रीडम एजुकेशन राइट टू प्रॉपर्टी जोड़ा को 300 ए रे अछि हला कोन अछि 300 ए हला 300 ए रे अछि बर्तमान जो राइट टू प्रॉपर्टी केते अछि 300 ए रे अछि हला the article guaranteed the right to equality before law okay तो देखिए को आर्टिकल एटा डिस्क्राइब करूची अरे अरे को आर्टिकल एटा डिस्क्राइब करता आर्टिकल guaranteed the right to equality before the law हला right to equality before law आर्टिकल 14 19 21 25 आर्टिकल 14 बहुत बड़े आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 इज राइट आंसर है ना तब देखो व्हिच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ओके देखिए व्हिच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 15 19 21 32 19 आर्टिकल 19 इज राइट आंसर है ना आर्टिकल 19 इज बहुत बढ़िया है ना तब देखो राइट टू एजुकेशन बिकम ए फंडामेंटल राइट अंडर व्हिच आर्टिकल है ना जो देखिए को आर्टिकल ऑन द राइट टू एजुकेशन right to education become a fundamental under the which article 21A 20 22 25 just give me one second ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଦିଅ ମତେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଦିଅ
Sorry for the interruption. ଟିକେ interrupt ପଡିଲା ତ I'm sorry for that thing. Okay. ତାହେଲେ ଦେଖ next question ଦେଖ. Which fundamental right cannot be suspended even during the emergency? Okay, जो fundamental right टा emergency समय रे भी से जगह रे कौन है परियो नहीं suspend ही परियो नहीं. कौन right to freedom, life and personal liberty, right to equality, constitutional remedies. हाँ ना आज क्वेश्चन टे कम ही अच्छी तो सेटा पे किसी असुविधा नहीं. हाँ रिवीजन करे दो हला. हो जल्दी जल्दी करे दो रैपिड ट्राई करे हला. ऑप्शन बी राइट आंसर. तापर देखो व्हिच आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके को आर्टिकल को हमें कहबा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 21 32 14 को आर्टिकल को हमें हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 बहुत बड़ा प्रीति. आर्टिकल 32 इज राइट आंसर ऑप्शन सी. तापर देखिबा व्हिच फंडामेंटल राइट प्रोहिबिट डिस्क्रिप्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. ओके है ना कौन रहे राइट आंसर यार जो फंडामेंटल राइट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस रिलीजन कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ 14 15 16 17. आर्टिकल 15 was the right answer. Article 15 is the right answer. जोड़ा होती fundamental prohibit discrimination on the ground of race, religion, caste, sex, place of birth. Okay. तब देखो which part of the Indian Constitution are Constitution are DPSPs are enshrined. Okay देखिए DPSP कितना नंबर पार्ट रे अछि. Sorry 15. Okay किसी असुविधा नहीं है ना. डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कितना नंबर पार्ट रे अछि. 3 4 5 6. जल्दी जल्दी आंसर दियो प्रीति. ओके आर्टिकल 4 है. आर्टिकल 4 इज पार्ट 4 इज द राइट आंसर. पार्ट 4. तब देखो व्हिच आर्टिकल अंडर द डीपीएससी प्रमोट्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. ओके देखो तो आर्टिकल अंडर डीपीएससी प्रमोट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ मेन एंड वुमेन आर्टिकल 39 42 44 48. Article 39 is the right answer. Article 39 is the right answer. तब देखो DPSP article promote the organization of village panchayats. Okay जो देखिबा केतनो आर्टिकल देखा होइछि कि ऑर्गेनाइज ऑफ द विलेज पंचायत डीपीएसपी रे मेंशन अछि ना. केतनो आर्टिकल 40 41 42 43. आर्टिकल 40 देखो आर्टिकल 40 देछन राइट आंसर आर्टिकल 40 ही हो बोला. आर्टिकल 40 इज राइट आंसर. Which article under DPSC aim to secure uniform civil code through India है throughout India. देखो DPSC कौन है उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड है. यूनिफॉर्म सिविल कोड कितने नंबर आर्टिकल अनुसार ऐसे 42 44 46 48 कितने नंबर पीटी बहुत बढ़िया 44 है ना. प्रथम को स्टेट इंडिया रे इंडिपेंडेंस बिफोर करथिला आ इंडिपेंडेंट पर प्रथम को स्टेट सेटा को ये मतलब एक्सेप्ट करथिला सेटा को कमेंट बॉक्स रे लिखो कौन रहेगा तार राइट आंसर है ना. तब देखो DPSP article promotes the protection and improvement of the environment. Okay तो देखिबा the DPSP promotes the protection and improvement of the environment. Okay कौन रहेगा राइट आंसर है को आर्टिकल ओनली जिनसे आबो 44 48 ए 48 ए दिस आंसर तो देखिए राइट आंसर 48 ए इज राइट आंसर. ओके 48 ए इज राइट आंसर है ना. How many fundamental duties are listed in Indian Constitution? Okay देखिबा केतरा फंडामेंटल ड्यूटीज अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे 10 11 12 13. 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इज राइट आंसर. 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है ना. फंडामेंटल ड्यूटीज टा गोटे मन रखितो कारण से भितरु डायरेक्ट न पचारले मध्य इनडायरेक्टली बहुत गोटे जिंस पचार होला. फंडामेंटल ड्यूटी टा समस्त के मन रखितो. ओके which article of the constitution deal with the fundamental duties. Okay केते नंबर आर्टिकल डिस्क्राइब करे फंडामेंटल ड्यूटी विषय रे. फंडामेंटल ड्यूटी विषय रे केते नंबर आर्टिकल से डिस्क्राइब करे.
51A is right answer. 51A or right answer. Fundamental duties were added by which of constitutional amendment? वो देखिए fundamental duties were added by which of the constitutional amendment? 42तम 44तम 73तम and 86तम. Amendment Act है constitutional amendment 42तम संसदर अनुଯାयी से जिनसा है चला. तब देखो the fundamental duties emphasize the protection and sovereignty, unity and integrity of India है. The fundamental duties emphasizes protecting the sovereignty, unity and integrity of India. कितना होगा article 51A A B C D भितरु हाँ इटा टिके क्लोज क्वेश्चन दा तो इटा पे समझ तो 51A सब क्लॉज C होगा ऑप्शन C हो राइट आंसर है. तब देखो the fundamental duties were added by the 86th constitutional amendment act. वो देखिबा the fundamental duty added by the 86th constitutional amendment act कौन protection environment provide education children 16 to 6 to 14 promote harmony safeguard the public property. To provide education to children between 6 to 14 years है एटा हो राइट आंसर. ओके तब देखो कि the fundamental duties enforced by law जदि कौन देखिबा कि fundamental duties टा को कोर्ट द्वारा एनफोर्स करा जाय परिबो कि yes no only during emergency only with the court approval. Okay no बहुत बढ़िया ऑप्शन बी इज राइट आंसर. नो हो राइट आंसर नो हो हला. फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री ला को कंट्री रो डिराइव करचे हमें फंडामेंटल ड्यूटी टा कोला फंडामेंटल ड्यूटी टा हमें को कंट्री रो आनी छे यूएसए यूएसएसआर जापान फ्रांस. यूएसएसआर बहुत बढ़िया है ना. तो फंडामेंटल ड्यूटीज एनकरेजेस सिटीजन्स टू सेफगार्ड public property. Fundamental duty encourages citizens to safeguard public property. 51A F, 51A G, 51I, 51J. इटा भी टिके क्लोज वाला क्वेश्चन दा तो समस्त टिके आईडिया नाही बोली कहबो कोन अछि. तो राइट आंसर हैला आर ओवर 51A I हैला 51 क्लॉज A I हो राइट ऑप्शन C हो राइट आंसर. अच्छा देखो वर्तमान एससीओ रो सबमिट हेतला एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रो सबमिट हेतला तो को कंट्री सेरा होस्ट करथिला तार ना लेखो को कंट्री सेरा होस्ट करथिला है ना को कंट्री सेरा होस्ट करथिला एससीओ रो सबमिट कोडेला को कंट्री सेरा होस्ट करथिला सेटा कमेंट बॉक्स रे लेखो. थैंक यू एवरीवन. आई होप कि समस्त भलो थे. आज क्लास टी छोटो ही हैला आ समस्त कहूची आर कि क्लास हेई पार नथला 10-15 दिन हला मांकर स्वास्थ्य खराब थिला मोर मांकर एंड ताकर देह बस्त सुस्थ होबार मु क्लास भी कहि पानथले. आज टू क्लास आरंभ हैला है ना आज रो क्लास कंटिन्यूस चलियो. तो थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू प्रीति एंड कार्लो सालकराज अन्य जो मान भी ऑनलाइन रहो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल है ना. आपन को प्रत्येक टीम लाइक आमो मोटिवेट करे आगो बढ़िबार. थैंक यू.